Hello everyone. I welcome you all on YouTube channel of LegalEdge After College. I hope you all are doing very good. Wish you all very happy Constitution Day. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कहीं कहीं तो लिखा है कि आज का जो दिन है that is 26th of November, it is celebrated as Law Day. एंड कहीं कहीं पे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे का नाम दिया गया है। ऑलराइट, सो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो आज का दिन है 26th ऑफ नवंबर, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे 2015 के बाद कहना स्टार्ट किए हैं। ऑलराइट, सो from the year 1979, from the year 1979 to year 2015, this particular day, 26th November, all right, has been celebrated as Law Day. But BJP government ने in the year 2015 इसको officially कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर कर दिया है। तो आज के दिन हम एक दूसरे को विश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे। ऑलराइट, सो हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे, लॉ डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता था? तो 1949 में इस पर्टिकुलर दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था। दैट इज द रीजन इट यूज्ड टू सेलिब्रेटेड एज लॉ डे। नाउ वी सेलिब्रेट इट as Constitution Day. All right, चलो, I hope सारे लोग ऑनलाइन आ गए हैं। And as we always start sessions with MCQ, so today also we will be starting sessions from multiple choice questions, most important multiple choice questions, which are very much important for your upcoming CLAT PG and AILET PG examination. And one more thing, आज का जो दिन है ये है 74th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन डे। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट in this particular session, I'll be discussing 8 multiple choice questions with you, followed by 5 most important constitutional law judgments. All right, so stay till the end because you're going to get a lot of information in this particular video. चलो start करते हैं from the question number 1. I hope the slides are clear. You can see the slides. Here it is written, the question whether the preamble of the Constitution of India is a part of Constitution of India was raised for the first time before the Supreme Court in which of the following cases? कौन सा ऐसा केस है इन चारों में से जिसमें प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा या नहीं होगा? इस क्वेश्चन को रेज किया गया था, पहली बार रेज किया गया था। जल्दी से आंसर दो। ऑप्शंस आर इन री बेरीबेरी यूनियन, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। ओके, नजर इज सेइंग ए, शुभा इज सेइंग ए, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या आंसर होगा यहाँ पे? Yes, answer A, in re Beriberi Union is the correct answer. This was a case where the question was raised that whether the preamble of the Constitution of India is part of Constitution or not. All right, next question here is, who among the following described the preamble as the horoscope of our sovereign democratic republic? Options are Aladi Krishna Swamy, Sardar Patel, K.M. Munshi, none of the above. What is the answer of question number 2? Hi Soumya, hi Shubha, hi Astha, hi Nazar. All right, what is the answer of question number 2 here? किसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को हॉरोस्कोप कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्विक, Subha is saying C. No, C is not the correct. Okay, so you're saying C, K.M. Munshi. Yes, it is a correct answer. So why have you written? I guess it is C. So the correct answer here is
K.M. Munshi described the preamble of Indian Constitution as horoscope of our sovereign democratic republic. All right, next. In which of the following cases Supreme Court held that preamble cannot be amended? Berubari case, Menka Gandhi case, S.R. Bommai case, या Keshavanda Bharti case? What is the correct answer here? Question number 3. कौन सा ऐसा केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये कहा गया था कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं किया जा सकता? Nazar is saying C. Are you answering question number 3 here? S.R. Bommai. Soumya is again saying C. Astha is saying C. What about others? So here I'm asking, in which of the case Supreme Court held that preamble cannot be amended? Somebody is saying A. Okay, here I'm getting mixed answers. So you have to answer this question after researching in the comment box. Because A, B, C, D सारे ही answers आ रहे हैं इस question के. All right. So research करके बताना कभी नहीं भूलोगे. Now fourth question. In which of the following case Supreme Court held that preamble can be amended without altering its basic structure? I hope इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी गलत नहीं देगा. All right. Options are Golaknath case, Menka Gandhi case, S.R. Bommai case, Keshavananda Bharti case. So now you have to write the question number and then you have to write the answer. All right. Question number 4 का क्या आंसर होगा यहाँ पे? 4 का Nazar is saying D. Learning law is saying D. Astha is saying D. Yes, Keshavanda Bharti is the correct answer. 1973 का ये case है and the most famous case in the history of Indian Constitution. You all know about it, right? Next question here is the expression socialist was intentionally introduced in the preamble by the Constitution 42nd Amendment Act 1976. Its principal aims is to, so जो word socialist जो जिसको 42nd Constitutional Amendment 1976 also known as mini constitution से ऐड किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जो प्रिंसिपल है ये एम करता है. ऑप्शन 1 eliminate inequality in economic and political status. Option B, eliminate inequality in political and religious affair. Option 3, eliminate inequality in income and status and standard of life. Option D says, eliminate class-based society. So, what is the correct answer according to you of question number 5? Nazar is saying 5 का A होगा. What about others? We are talking about the word socialist. Nazar, you're saying A. So you're saying कि economic and political status की inequality को eliminate करना aim है word socialist का. And Shubha is saying D. So you're saying क्लास बेस्ड सोसाइटी को एलिमिनेट करना सोशलिस्ट वर्ड जो प्रियम्बल में है उसका एम है. व्हाट अबाउट अदर्स? सौम्या इज सेइंग इन दिस केस it overruled the Golaknath judgment, so answer is D. All right. Soumya, I think you're talking about question number 4. Now I'm talking about question number 5. 5 का Ranjana is saying A होगा. सोशलिस्ट का मतलब होता है, ठीक है,
eliminate inequality in income and status and standard of life. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर सी होगा. Question number 5 का आंसर C होगा. So the word socialist means eliminating inequality in income and status and standard of life. All right. So answer C is the correct answer. This was for 4, not for 5th. Okay, Soumya. All right. Now, see next question. It says, in Tinsukia Electricity Company versus State of Assam, the Supreme Court pointed out that the term socialist used in the preamble to Constitution of India means a state whose basic policy is to prohibit concentration of wealth, distribute equality, equitably the natural resources, prohibit concentration of wealth, and uplift the living standard of people, prohibit concentration of wealth, and distribute equitably the natural resources. What is the correct answer of question number 6 here? Quick. Question number 6 का क्या आंसर होगा? Here in question number 6, they're talking about a case, Tinsukia Electricity Company versus State of Assam. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिस्ट वर्ड जो कि प्रियम्बल में यूज्ड है, ठीक है, उसकी क्या बेसिक पॉलिसी बताई थी? Nazar is saying C. Sorry, you're saying D. Nasifa is saying D. What about others? Again, so you have to correlate, you have to answer this question by thinking about this particular question. So in question number 5, we were talking about expression socialist. इसका intention या aim क्या है? ठीक है, इसका एम क्या है? ठीक है, सोशलिस्ट का एम क्या है? तो हमने क्या देखा था दैट इन क्वेश्चन नंबर 5 सोशलिस्ट वर्ड का एम था कि इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना, इनकम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना, एंड जो भी इन सारी चीजों के बीच में इनइक्वालिटी है उसे पूरी तरीके से एलिमिनेट करना वाज द पर्पस टू इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट वर्ड बाय द वर्च्यू ऑफ 42nd constitutional amendment in 1976 to preamble of Indian Constitution. Now, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगेन वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है. यहाँ पे they are asking about a case law. The name of the case is Tinsukia Electricity Company versus State of Assam. ठीक है, यहाँ पे सोशलिस्ट जो वर्ड टर्म यूज हुआ है प्रियम्बल में, पूछा जा रहा है कि वो किस स्टेट हुज बेसिक पॉलिसी इज, उसका मतलब क्या है? मीन्स अ स्टेट, कौन सी बेसिक पॉलिसी की बात हो रही है? तो अगेन जो आंसर होगा वो होगा प्रोहिबिट concentration of wealth and uplift the living standard of people. क्योंकि the basic meaning of this word socialist is to eliminate inequality on the basis of standard of living, on the basis of income, etc, etc. All right, so here the correct answer again is C. All right, so I have to mention one thing here. Sample paper issue कर चुका है consortium, and sample paper 1, sample paper 2 दोनों के अकॉर्डिंग क्लैट पीजी 2023 एग्जाम, जिसका एग्जाम आपका 18th ऑफ दिसंबर को होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑलराइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन आपका मिनिमम 35% ऑफ पेपर कॉन्स्टिट्यूट करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन को काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, एंड दे एक्सप्लिसिटली मेंशन देयर इन द सिलेबस एज वेल कि सारे रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, सब कुछ आपको कवर करके जाना है. सो द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हियर इज टू मेक यू अवेयर दैट कैसे सवाल आ सकते हैं, और आपका जो लाइक एनालिटिकल थिंकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. ऑल राइट, एंड दैट इज द रीजन आई पिक्ड क्वेश्चन नंबर 5th and question number 6 from the same concept. All right, now next here is, in the case of good governance
India Foundation and another's, Union of India and another's, Supreme Court dismissed the petition against the use of the word dash in preamble of the Constitution. All right, so here we are talking about the case जिसका नाम है Good Governance India Foundation and Others versus Union of India and Others 2010. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की थी पिटीशन, ठीक है, अगेंस्ट द यूज ऑफ वर्ड. कौन से वर्ड के यूज के अगेंस्ट ये पिटीशन फाइल हुई थी? कौन से वर्ड के यूज के अगेंस्ट? अब यहाँ पे यूज के अगेंस्ट मतलब कहाँ पे? प्रियम्बल में कौन से वर्ड के यूज के अगेंस्ट? ऑलराइट, ओके, some of you answering B, secular. All right, what about others? Question number 7 का क्या आंसर होगा according to you? According to you all, क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? Question number 7. Ranjana, Soumya, Astha. Nasifa is saying B. Nazar is saying B. What about others? What, according to you, should be the correct answer here? कौन सा ऐसा वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में जिसके यूज के अगेंस्ट petition फाइल हुई थी in the case of, and it was considered in the case of Good Governance India Private Limited, sorry, Foundation and another's, Union of India and another's 2010. Question number 7 का correct answer क्या होगा? Not even a single person yet given the correct answer. Again, the answer is socialist only. All right. Now, next question here is, which of the following cases it was said by the Supreme Court in 2005 that it is well accepted by thinkers, philosophers, and academicians that if justice, liberty, equality, and fraternity, including social, economic, and political justice, the golden goals set out in the preamble of the Constitution are to achieve, the Indian polity has to be educated and educated with excellence. कौन से केस में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? Quick. What, according to you, should be the answer of question number 8 here? Is it Onkar Lal Bajaj versus Union of India? Is it Z Telefilms Limited versus Union of India? Is it Gopala Krishnan Nair versus State of Kerala? Or is it P.A. Inamdar versus State of Maharashtra 2005? What, according to you, is the correct answer of question number 8? Yes, Soumya, you are right. Here the correct answer is D, that is P.A. Namdar. In this particular case, Supreme Court said that it is well accepted by thinkers, philosophers, and academicians that if justice, liberty, equality, and fraternity, including social, economic, and political justice, the golden goals set out in the preamble of the Constitution are to be achieved, the Indian polity has to be educated and educated with excellence. अगर आपको याद हो तो right to education की बात भी PA इनामदार केस में डिस्कस की गई थी. All right, now we will move forward and we will see 5 judgments. All right, now here the first judgment is in re Beriberi केस 1960 का ये केस है. All right, थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप देख लेते हैं. So हुआ ये था कि सर साइरल रेडक्लिफ, ठीक है, इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिस लाइन को हम रेडक्लिफ नाम लाइन के नाम से भी जानते हैं. व्हेन दिस लाइन वाज ड्रॉन, एट दैट टाइम देयर वाज अ कंफ्यूजन रिमेन्ड इन रिगार्ड्स ऑफ सर्टेन एरियाज. वो एरिया जो था वो बेरिबरी यूनियन का एरिया था.
ऑलराइट, एंड उसके बाद उस एरिया को लेके डिस्प्यूट्स होने लगे, एंड जो द देन प्राइम मिनिस्टर ही साइंड नेहरू नून अग्रीमेंट। ऑलराइट, द होल कंटेंशन ऑफ दिस केस वाज कि क्या एक अग्रीमेंट को साइन करके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ एरिया किसी और कंट्री को दे सकते हैं, ठीक है। देन इट वाज चैलेंज्ड हियर, can through a prime ministerial agreement we can give away our area to another country. So this was the issue in this particular case. All right, क्लियर हुआ? यहाँ पे इशू क्या था इस पर्टिकुलर केस का, ये समझ आया? नाउ so what next happened? So, using its power of presidential reference under Article 143 of the Constitution, the President of India sent this question before the Supreme Court. Now, from here, Article number 143 of Indian Constitution important हो जाता है, and Article number 143 of Indian Constitution deals with power of President to consult Supreme Court. 143 आर्टिकल प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर पाए। सो इस पर्टिकुलर केस में प्रेसिडेंट ने अपने जो उनके पास पावर है आर्टिकल 143 में उसको यूज करके जो सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन पूछा। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3, ठीक है, कैन नॉट बाय इटसेल्फ मेक अ सेपरेट लॉ टू इम्प्लीमेंट नेहरू नून अग्रीमेंट। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये आंसर किया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। आर्टिकल 3 में जो पावर दिए गए हैं पार्लियामेंट को, उसमें ये पावर नहीं इंक्लूड होता जिससे वो कुछ एरिया किसी और कंट्री को दे दें, ठीक है। And one more thing, in this particular case, Supreme Court also held that preamble is not a part of Constitution of India. In this case, also Supreme Court mentioned that preamble is not the part of Indian Constitution, and because preamble is not a part of Indian Constitution, it have no substantial power. So if in case you're going to get a question in your exam where they are asking ki which was the case where Supreme Court held that preamble is not the part of Constitution, you always have to mark invariably case. अब तक आपको ये case समझ आ गया होगा. Now, next case law of the day is Golaknath. Golaknath versus State of Punjab. It was an 11-judge bench judgment. Now, in this case, there was a tussle of supremacy between legislature and judiciary, all right, which started in the case of Sankari Prasad, ठीक है, which started in the case of Sankari Prasad and Sajjan Singh, and it was escalated in this particular present case, ठीक है. Here the question was, the primary question which was raised in this particular case was whether the word law, जो शब्द law है, जो कि आर्टिकल 13 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या वो इंक्लूड करेगा वो सारी चीजें भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड की जाती हैं. आई रिपीट, हियर द क्वेश्चन वाज वेदर द वर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल. दिस वाज द प्राइमरी question in this particular case. Supreme Court held that there is no difference in this particular case. Supreme Court ने कहा कि there is no difference between the ordinary law and constitutional amendment, and that law includes constitutional amendment, which means you cannot pass a law which goes against fundamental right, and similarly you can also not pass a constitutional amendment in article 368 which goes against the constitutional amendment. तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर होती है कि जो ये सवाल था कि जो आर्टिकल 13 में ये जो शब्द लॉ है, ये जो वर्ड लॉ है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इंक्लूड करेगा. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही कि कोई डिफरेंस नहीं है, जो ऑर्डिनरी लॉ वो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो चीजें ऐड की जा रही हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है,
which means you cannot pass a law. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो भी लॉ ही है. इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है. आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड आर्टिकल 368 को यूज करते हुए भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो. ऑलराइट, सो this was held primarily in this particular case. यहाँ तक क्लियर है? In this case, Soumya is writing, in this case, it overturned the judgment of Shankari Prasad and Sajjan Singh. Soumya is saying, and was held that law includes constitutional amendment. Yes, Soumya. Now, next case of the day is Keshavanda Bharti versus State of Kerala case. 1973 में 13 judges ने ये judgment pronounce किया था, and in this particular case the 24th constitutional amendment जो कि pass हुई थी after गोलकनाथ judgment, इसको challenge किया गया before 13 judge bench, and Supreme Court की 13 judge bench ने 7-6 मेजॉरिटी से हेल्ड किया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 क्लॉज 3 जो कि ऐड किए गए थे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है. सो देयर वाज अ क्वेश्चन कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, and there are certain basic features of the constitution which are so essential to the constitution that if we remove these basic features, the whole foundation of the constitution will be shaken. And by saying that यहाँ पे basic structure का doctrine draw किया गया और कहा गया कि आप कोई भी ऐसी amendment नहीं कर सकते हो जो violate करे basic structure of the constitution ko. All right, so in this particular case basic structure was discussed. Article 24, sorry, constitutional amendment 24 held constitutional. All right, next case here is ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla 1976. It is again a landmark judgment where the contention was related to NISA Act. All right, so जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, ठीक है, तो the opposition leaders were arrested and kept in prison. One of these laws was NISA, Maintenance of Internal Security Act, ठीक है, जिसकी वजह से 1 lakh senior and junior opposition leaders were arrested and kept in prison, and complete due process was not followed. Now, whenever we talk about due process, we go and see article number 21, and a lot of their fundamental rights under article 21 and under article 22 of the constitution of the individuals who were detained were not given. Now, some of the high court supported the opposition leaders. कुछ high court ने क्या किया? Opposition leader को support किया and common appeal file की गई Supreme Court में in case of ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. Now, यहाँ पे जो opposition leaders थे, उनका contention था कि during national emergency, their fundamental right cannot be taken away. Now, understand here the whole issue was कि emergency के दौरान ड्यूरिंग इमरजेंसी जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं क्या उनको जो गवर्नमेंट है वो ले सकती है या नहीं ले सकती है. देन right are not just constitutional right but they are बर्थ राइट. तो जब उन्होंने ये कंटेंट किया कि इमरजेंसी के ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे और नॉट, सो दे सपोर्टेड देयर आर्ग्यूमेंट सेइंग दैट दे आर नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट दे आर ऑल्सो आर बर्थ राइट. ऑन द अदर हैंड द रूलिंग गवर्नमेंट कॉन्टेंट दैट दे आर सर्टेनली बी टेकन अवे. ठीक है, तो इनका क्या कहना था, गवर्नमेंट का कहना था कि बिल्कुल इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लिया जा सकता है. इस पर्टिकुलर केस को डिसाइड किया 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने विद 4:1 मेजॉरिटी और यहाँ पे हेल्ड किया कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं. ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन डेफिनेटली बी सस्पेंडेड. दिस वाज एन एक्सट्रीमली controversial judgment. It was an extremely controversial judgment. Remember, ये controversial इसलिए है क्योंकि यहाँ पे out of जो 4 judges थे, ठीक है, तो यहाँ पे dissenting opinion
जो थी दैट वाज ऑफ जस्टिस HR खन्ना. नाउ ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री कि ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में डिसेंटिंग ओपिनियन किस जज की थी. तो यहाँ पे जो ये असेंटिंग ओपिनियन में 4 जजेस थे, उनमें से जो 2 जजेस हैं वो ऑलरेडी अपने डिसीजन को लेके अपोलोजाइज कर चुके हैं, और ये जो डिसेंटिंग ओपिनियन थी उसकी वजह से जस्टिस HR खन्ना को अपनी जो CJI की जजशिप है वो भी नहीं मिल पाई. नाउ सौम्या ठाकुर इज सेइंग हियर दैट आर्टिकल 13 clause 4 and held that law does not include constitutional amendment. Further, it held that preamble being a part of constitution can be amended by the parliament under Article 368. Yes, thank you for adding on, Soumya. All right, next case of the day is Menka Gandhi versus Union of India. Now, we all know about this case. इस केस के फैक्ट्स इंटरेस्टिंग हैं, लॉ स्कूल में आपने बिल्कुल पढ़े होंगे. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया था AK गोपालन के जजमेंट को. नाउ अंडरस्टैंड, AK गोपालन का जजमेंट जो है इट केम इन 1950. All right, it came in 1950. It was this case which started the notion of enlarging and expanding the concept of fundamental right. इस केस से ही जो फंडामेंटल राइट्स का परव्यू है उसको एनलार्ज और एक्सपैंड कर दिया गया. इस केस में ये भी कहा गया था कि अगर कोई ट्रायल होती है तो इट शुड बी जस्ट, रीजनेबल एंड नॉन आर्बिट्री. द फैक्चुअल मैटर्स ऑफ दिस केस वर कि जो मेनका गांधी होती हैं उनका पासपोर्ट जो है उसे इंपाउंड कर लिया जाता है. जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनके पासपोर्ट को इंपाउंड कर लेती है, और उस वक्त पे रूलिंग गवर्नमेंट जनता पार्टी की होती है. उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी एक पिटीशन लेके जाती है उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए. सो यहाँ पे हेल्ड हुआ that citizens have a right to personal liberty under Article 21 of the Constitution of India, which became a really important precedent of fundamental right cases. The judgment has been cited over more than 400 times till date in different Supreme Court judgments. All right, now Justice Chandra, ठीक है, Justice Chandra ने यहाँ पे कहा, और ये बिल्कुल करेक्ट था, when he said that the Menka Gandhi case epitomized the shift in legal jurisprudence in the late 1970s, with the Supreme Court taking on a more active role in trying to assert its legitimacy after emergency. Now understand, ये जो हम cases पढ़ रहे हैं, ये cases on and off emergency के थोड़े बाद में पहले तब के हैं. तो उस वक्त पे जो इंडिया की कंडीशन थी, लीगल पोजीशनिंग थी, दैट वाज वे डिफरेंट. ऑल राइट, तो ऐसा कोई जजमेंट आना जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि आपका जो राइट है, ठीक है, राइट जो आपकी पर्सनल लिबर्टी का राइट है, ये एक राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है. इट इज पर्टिनेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट this case came around a time when Indian judiciary was already going through heavy criticism for failing to defend constitutional value and liberty during emergency. All right, so I hope by these 5 set of cases you understood कि तब की conditions और अब की जो conditions हैं वो काफी change हो चुकी हैं, और तब की जो conditions होती थी they were different. There used to be judges like HR खन्ना, Justice HR खन्ना, जो काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े केसेस में अपने डिसेंटिंग ओपिनियन दिए हैं. एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन यू कैन tune to our channel, you can you can subscribe to our channel. And if you have any doubt related with CLAT PG और AILET PG 2023 एग्जामिनेशन, आप अभी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट लीव कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, bye bye, take care and keep studying.